Hello everyone, welcome to Apti Place Academy for Civil Services. There's a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from two important newspapers. The first being the Hindu and the other is Indian Express. So most important and relevant news of the day will be discussed in this session. Let's get started. Today is 7th of February. The first topic is Centre plan to tweak no-build zone around monuments. Second, Centre to discuss aviation fuel inclusion into the GST. This is a long debated issue that has still not got clarity in terms of the inclusion in GST. Third, government prepared to deal with any global development. This is with regards to the US Fed, which will increase the interest rate possibly by March 2022. The second last is Russia 70% compact ready for invasion. This is what the US has to say. We'll understand the detail and the consequences of this event. The last is India's return to Central Asia. It's an editorial from the Hindu. Apart from this, at the end of this video, there will be some MCQ questions. These questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press the like button. And just to tell you about the prelims test series, those of you who would be appearing for test series, you can avail this benefit. There are total 60 tests plus IS Gazetted magazine, right? So 60 high quality tests would be there, 38 sectional tests, 5 previous year question paper, 7 monthly current affairs and 10 full length tests. For more details, you can refer to the description section of this video where I provided a dedicated link. Starting with the first news of the day, that is Centre plan to tweak no build zone around the monuments. This is something very significant for the conservation of monuments in India. And precisely this particular news is important for General Studies Paper 2, Government Policies and Intervention for the Development of Various Sectors and Issues Arising from it. So what central government has decided, we'll see. So the Ministry of Culture, which is a body which aims to protect the entire monuments and regulate the monument procedures and condition in our country, is working to amend 100 meters prohibited area for the construction activity around the centrally प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, वैसे मॉन्यूमेंट जिसको ASI प्रोटेक्ट करती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिन मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करती है, उनके 100 मीटर्स के एरियाज में किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को अलाउ नहीं की जाएगी, राइट? And this has to be replaced with a specific site limit to be decided by an expert committee, right? Now you see the details that was already there in the Ancient Monument Archaeological Sites Remain Act of 1958, which provide for the preservation of an ancient historical monument या कोई भी और archaeological sites हो इंडिया में जो national importance के लिए, उसके लिए एक specific act बनाई है गवर्नमेंट ने जिसको Ancient Monument and Archaeological Site Remain Act कहते हैं. This was also amended. We'll see the detail of this as well. So AMASAR, this is an act, and the amendment was there in the recent time. So we'll see actually what has happened. So according to the Ancient Monument and Archaeological Site Remain, this was the 1958, it was amended in 2010 to declare that the 100 meter radius जो है किसी भी protected monument की, this has to be prohibited, and next 300 meter of the areas has to be a regulated area. Means that no construction activities can be done without the NOC or the permission of an expert committee. Now the act defined the prohibited area where 100 meter has been announced as a protected monument around that particular area. So the radius of 100 meters is something that would be very significant for a centrally protected area, or especially the area which is under the Archaeological Survey of India. Now the center government has extended the prohibited area beyond 100 meters, which उसकी extensions की जाएगी, but again there is a limitation that has to come from the subject expert committee. So the act does not permit the constructions of such in जो भी prohibited areas होंगे उसमें certain expectations जो हैं, कुछ ऐसे conditions होंगे वो applicable होंगे, then only the construction can be proceeded, and that has to be go in a welfare condition जहाँ पे individual कुछ community की benefits हो रही. So the act prohibit the construction of the prohibited area for the public purposes only, but there's no detailed versions of public purposes. We'll see the bill empower the central government to allow the public work based on the recommendation that is coming from the National Monument Authority. जो NMA होगी इसके पास sole power होगी, plus it would be guided by the
subject expert subject expert committee जो है SEC, they would be looking into the matter, and only thing that is essentially required for public purposes can have access to that area. Now the Ministry of Culture has amended and they give the ASI more in terms of encroachment. So if that particular area, which is again under the boundary line, will not be allowed with certain exceptions, and the amendment will also enable the ASI to act against the encroachment by holding the relevant authorities. चाहे वो illegal building हो, protected site के areas में सारी चीजों को illegal ही count किया जाएगा. And this would be a similar that would empower the Indian Forest Act also. The proposed amendment was likely to be sent to the cabinet approval soon. So one, it has been given a proper legislation and backing. So definitely the National Monument Authority या फिर जो ASI है उनके पास बहुत ज़्यादा power होगी to regulate the area under their jurisdictions. Now, Center to discuss aviation fuel inclusion in the GST, that is Goods and Services Tax. This particular news is important for General Studies Paper 3, Indian Economy and Issues Related to Planning, Mobilization, Resource, Growth and Development. So according to the Ministry of Finance, जिन्होंने recently कहा है कि जो aviation fuel turbine है उसको GST में include करने के लिए GST Council की meeting होनी है, and this matter has to be tabled and the discussion has to be made. The consensus from the state has to come, both from the state as well as the union territories has to take a note of this, whether it should be included or not. So the high global fuel prices can cause a concern for the industry. We have seen that fuel prices, the air turbine fuel has been increasing internationally. And the global crude oil prices has also been hovering around 90 per barrel. So this is again something which is impacting the overall logistics and air turbine fuels. So GST की बात करें, when it was actually introduced in 2017, this was the day that GST was adopted. तो उस टाइम पे कुछ ऐसे taxes थे जिनको amalgamate नहीं गया, जिनको combinations में या फिर combine नहीं की गई है. That include dozens of central and state levies taxes और 5 commodities जो taxes थे. The first is crude oil, natural oil, petroleum, diesel and air turbine fuels जो हैं, इन सारी चीजों को GST के preview से बाहर रखा गया. So these were not included in the GST, right? So this is again important. But now what was actually happening जब GST में नहीं include की गई तो state और central दोनों इस पे अपने अपने हिसाब से charge करते थे. तो present अगर आप बात करें किस तरह से charges होती हैं, so excise जो duty होती है, central government excise duty लेती है air traffic fuels पे और state government उस पे VAT लेती है. So this is how both the central government as well as the state government is being benefited. Now, if you see the global prices, how it is fluctuating, the global average की अगर बात करें, this is the rate in tons. So this is 1028, right, in dollar. And in आप अगर बात करें Delhi की, it has taken a surge of around $1560 per ton. So this is the point that government wanted to include this in the GST, and the benefits and whatever the benefits is there, that is going to be shared among the state and union territories. Now, government prepared to deal with any global development or any decision that is taken across the globe. So how India is prepared, we'll see that this is especially in context with the US Fed interest rate increase. So this news is important for General Studies Paper 3, Inclusive Growth and Issues Arising from it. So Finance Minister ने भी recently एक press conference की थी where she said that India is prepared to deal with any situation that is arising in terms of the global development, which include जो FD है, खास करके US की जो Fed Reserves हैं, उन्होंने जो मनी रोल बैक की बात कही है उसको लेकर के इंडिया में जो भी रिपरकशंस होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इवन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, द एपिक्स रेगुलेशन बैंकिंग सिस्टम इन अ कंट्री हैज टेकन अ नोट एंड वी आर प्रिपेयर फॉर इट. So the finance ministry has urged all the corporates जो इस टाइम में situations हैं उसमें recovery की बहुत ज़रूरी, because we have seen that during COVID-19 the investment has seen a shortfall. Now this is a time when the economy is taking almost a V-shaped recovery. We can anticipate that, although बहुत सारे expert ने कहा that अभी भी ये K-shaped recovery की तरफ है, but India want a K-shaped recovery. For that the startup has to work, the investment has to come, right? Then only we can possibly come through a V-shaped recovery.
Post pandemic, the world order has changed. अगर बात करें leaderships की, that has also ensured that India does not miss this opportunity at this point of time, where every global and emerging economy is doing at their best. So RBI and the government is working together, and they're keenly observing the global financial market ecosystem so that the Indian economy, the ground, the performance of the economy is not being deteriorated. And India would definitely leap forward the sustained growth before 2047, because we are in the league where India would be definitely looking to the developed economy. और ये टाइम रखी गई है 2047 की, जहाँ पे एक डेवलप्ड इकोनॉमी की स्टेटस के साथ इंडिया को आगे बढ़ना है. Now, if you see the rising inflations which we've seen in November, so this is for November 2020 till May 2021, this is a fluctuation that we can see, or increase we can see, in terms of the consumer price index and the wholesale price index, right? You can figure it out from this particular figure. Now, US Fed Reserve policy की अगर बात करें, US के जो Fed Reserve उन्होंने कहा है, उन्होंने सिग्नल दिया है that there would be hike increase in the interest rate, leading to nervous in the Indian market also, and the rise in the Federal Reserve would definitely affect the economy. जिस तरह से हाइक होनी है इंटरेस्ट रेट में, दैट विल नॉट ओनली इम्पैक्ट यूएस बट जितनी भी ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट है उनकी कॉन्सिक्वेंसेस सारे इकोनॉमी में होनी है, दैट ऑल्सो इंक्लूड इंडिया, right? So India has already said that we are well prepared, and the US Fed Reserve has decided to end the bond purchasing program in March. So they would be purchasing any bond. उसके वजह से इंडियन जैसे इकोनॉमी को क्या इसके डेफिसिट होंगे या फिर क्या रिपरकशन होंगे, डेफिनेटली जो इमर्जिंग इकोनॉमी है इंडिया की, उनकी जो बेनिफिशरीज है फॉर इंक्रीज लिक्विडिटी, जो ह्यूज अभी तक फ्लो आई थी मनी की, वो आउटफ्लो होगी, एंड दिस वुड ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम. इम्पैक्ट क्या क्या हो सकती है जब अगर यूएस फेड अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है, तो इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट होंगे? द बॉन्ड यील्ड विल राइज ड्यू टू ग्रोइंग डॉलर शॉर्टेज इन द ग्लोबल मार्केट, और एक वीकर रूपी विज़ डॉलर रिजल्ट देखी जा सकती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द, खास करके इंपोर्ट की अगर बात करें, एक्सपेंसिव इंपोर्ट हो रही है क्रूड ऑयल की. सो दिस कैन ऑल्सो लीड, जहाँ पे हमारे पास जो फॉरेन करेंसी है उसमें भी क्रंच होगी, बिकॉज ऑलरेडी यूएस फेड अभी जो उनके इन्वेस्टर्स हैं दे वुड बी ऑल्सो कमिंग आउट, जितने भी इनकम इनफ्लोज हुई थी वो सारी आउटफ्लो हो जाएगी वापस. सो अगेन दिस इज अ प्रॉब्लम दैट कैन अराइज, and foreign fund inflow will face a threat from the US Fed that will tapers of buying all the assets that is there in India. Specifically, we are concerned about India. So let's see when the decision is coming. This would be not a random decision, and government is definitely planning to do this. Although जो global price है crude oil की वो भी कम होगी, तो फिर बहुत ज़्यादा stability maintain की जा सकती है. Russia 70% combat ready for invasion in US. This is a topic which has been coming to international section every day, and the anticipation is with regard to Russia's invasion to the Ukraine. We'll see the possible aspect of this news. This particular news is important for General Studies paper 2, effect of policy and politics for developed and developing countries. तो जिस तरह से recent में debate चल रही है and the tussle between US and Russia in terms of Ukraine, we know that something is going to happen, but still there's no clear picture in terms of things going to happen in future. तो according to US official, US के जो official उन्होंने claim किया है कि रशिया ने अपने almost 70% combat के लिए full scale पे तैयारी कर ली है यूक्रेन पे basically invade करने के लिए. And more tactical group, this is called BTC. This is an advanced group of Russia which has already been bordering इन नेबरिंग कंट्रीज ऑफ यूक्रेन, जैसे पोलैंड जैसे कंट्रीज हैं, वहाँ पे ऑलरेडी जो बटालियन टैक्टिकल ग्रुप हैं वो आ चुकी हैं. सो दिस इज द एडवांस्ड ग्रुप. बात करें पहले जितने भी बीटीजी थे वो उनकी नंबर 60 हुआ करती थी. नाउ दिस नंबर हैज इंक्रीज टू 83, एंड दिस शोज दैट डेफिनेटली जो रशिया की इंटेंशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, वो यूक्रेन पे इन्वेट कर सकती है. इसके अलावा 14 और भी ऐसे हैं जो वहाँ पे आने वाले हैं उस रीजन पे, बॉर्डर एरिया ऑफ यूक्रेन, राइट. सो दिस वुड बी ऑलमोस्ट डेफिनेटली दिस वुड बी क्लोज टू 97, राइट, दैट वुड बी कमिंग टू यूक्रेन रीजन. तो ये जो खास करके बटालियन टैक्टिकल ग्रुप है, दिस आर द एडवांस्ड ग्रुप, अ कॉम्पैक्ट ग्रुप दैट वाज आल्सो यूज्ड प्रीवियसली बाय रशिया. Now, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यूएस के, उन्होंने कहा है, उन्होंने हिंट किया that Russia could invade Ukraine within weeks or day, and it could still have an
diplomatic pathway forward. So they are still optimistic कि रशिया इस तरह से ना करे. But let's see how what is going to happen. And US president has recently ordered that 3,000 extra troops in the Poland in the Romania region has to be moved so that they can reassure the NATO alliance. US is pitching that definitely जो यूक्रेन है उसको नाटो के साथ अलायंस में मिलनी चाहिए एंड रशिया वांट दैट इट शुड नॉट जॉइन द नाटो अलायंसेस. देयर इज अ इंटेंशन. व्हाट इज द इंटेंशन विद दैट विल डिस्कस दैट आल्सो. तो अगर बात करें सबसे पहले रशिया के ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट के, राइट, तो ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट के बारे में अगर बात करें, यू कैन सी द रीजन, द नंबर ऑफ द ट्रूप्स अकॉर्डिंगली आर डिप्लॉयड इन बॉर्डर एरियाज. दिस इज यूक्रेन. सो ऑलमोस्ट रशिया ने पूरे जो यूक्रेन की बॉर्डर है उसको जगह जगह पे जहाँ पे उनके एस्पेक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको कैप्चर किया हुआ है बाय देयर मिलिट्री. Now this map is very very important for your prelims and mains examination. Not only for prelims but also for mains questions पूछे जा सकते हैं. prelims में तो सवाल अक्सर ही पूछे जाते हैं, खास करके जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं उनको लेकर के, राइट. So now this is a whole debate with this Ukraine. और ये रशिया की पार्ट थी जब सोवियत यूनियन से यूक्रेन को अलग किया गया था in 1999, राइट. So this was a time when it has actually happened. और बात करें इंपॉर्टेंट कि क्यों रशिया इस चीज के पीछे है कि यूक्रेन खास करके नाटो अलायंसेस को ना ज्वाइन करे. यूक्रेन वाज अ पार्ट ऑफ रशिया. जब सोवियत यूनियन से आने से पहले एक पार्ट थी रशिया की, और रशिया वापस ये चाहता है कि यूक्रेन फिर से रशिया में मर्ज कर जाए, राइट. एंड बट यूक्रेन के जो लोग हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि वो वापस वहाँ पे जाएं. दिस इज अगेन, और ये हमेशा चाहते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है उनके साथ वो मर्ज करके वो एक इंडिपेंडेंट, एक सोवरेन कंट्री बने. क्योंकि अब अगर यूक्रेन की हिस्ट्री देखेंगे, इफ यू सी द यूक्रेन हिस्ट्री, दिस कंट्री वाज ऑलवेज बीन अंडर सम कंट्री. हर एक कंट्री, जो भी ये कंट्री है, पिछले 5 सालों से किसी ना किसी कंट्री से डोमिनेटेड ही रही है. इन 2014 व्हाट हैज हैपेंड, जब इसको अलग 1999 में अगर बात करें, 1999 में जब अलग हुई है, तब उसके बाद से ये चाहते थे कि अब हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहें और रशिया के साथ ना जाएं. हमारी जो कोशिश होगी वो ये होगी कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ मिल करके ही चले. So this is the reason that they want to join the NATO forces. जो NATO के अलायंस है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, and they want to avoid Russia. But Russia ये चाहती है कि वापस ये आ जाए, और अगर NATO यहाँ पे इसके साथ अलायंस, अगर यूएस ने ज्वाइन कर लिया NATO को, तो रशिया उतनी पावरफुल नहीं रहेगी, बिकॉज फिर सारे कंट्रीज इनके सपोर्ट में आएंगे, राइट. सो दिस इज अ रीजन दैट रशिया ये कभी नहीं चाहेगी कि नाटो फोर्सेस के साथ यूक्रेन में मर्ज की जाए, राइट. यूक्रेन को पार्ट बनाया जाए, नाटो फोर्सेस का मेंबर बनाया जाए. बिकॉज अगर ये यहाँ पे नाटो नहीं आती तो रशिया कहीं ना कहीं किसी टाइम पे भी इनको मना सकता है. बट वॉट यूएस वॉन्टेड कि नहीं, वी वॉन्ट दैट नाटो शुड बी देयर, ताकि जितने भी इस रीजन पे यूरोपियन कंट्रीज हैं, राइट, वो उनको सपोर्ट करे और कहीं ना कहीं रशिया की जो पावर है उस रीजन में ब्रेक करे. एंड क्रीमिया वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस विच वॉज डिवाइडेड, खास करके 2014 में जब ये चीज़ें हुई. सो देन ऑल्सो दिस शोड द सिग्नल दैट मोस्ट पीपल डू नॉट वॉन्ट. ऑलमोस्ट 46% जो लोग थे उन्होंने रशिया से अलग होने की बात कही. सो दिस हैज़ अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑल्सो. आप सिर्फ इसको करेंट प्रीटेक्स्ट में नहीं देख सकते. यू हैव टू सी ऑन द बैकग्राउंड ऑल्सो दैट हाउ द थिंग हैज इवॉल्व. एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो. Now, India's return to Central Asia. This particular news is an editorial important for General Studies Paper 2, Bilateral Regional Grouping and Agreement Evolving India's and Affecting India's Interest. This editorial is written by Happymoon Jacob. He is a professor at Jawaharlal Nehru University. So what I'm going to discuss under this editorial, there will be 5 important subheads. First is India and Central Asia region, great power dynamics, focus on Afghanistan, the challenges and the way forward. So the entire editorial focuses upon the Central Asia region and its concern. तो बात करें रिसेंट में जो कुछ मल्टीलैटरल इवेंट्स हुए हैं, लाइक इंडिया एंड सेंट्रल एशिया समिट, इंडिया एंड सेंट्रल एशिया डायलॉग और रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान. सो दीज 3 is so evident that India play a very significant role. For India, सेंट्रल एशिया की जो रीजन है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है, राइट. तो किस तरह से इंडिया देखती है सेंट्रल एशिया रीजन को और कहाँ वैक्यूम क्रिएट हुई है, सो दैट वी कैन फिल इट. सो विल अंडरस्टैंड दिस एडिटोरियल इन डिटेल. तो इंडिया और सेंट्रल एशिया की बात करें, इंडिया हैज़ अ लिमिटेड इकोनॉमिक एंड अदर स्टेट इन टर्म्स ऑफ द सेंट्रल एशियन कंट्री. प्राइमरली फिजिकल एक्सेस की वजह से सेंट्रल एशिया कंट्री इज ऑलमोस्ट अ लैंडलॉक कंट्रीज. तो यहाँ पे जो इंडिया की प्रेजेंस है वो काफ़ी कम भी रही है शुरुआती दिनों से.
India's mission in Central Asia is responsive to new geopolitical situations. But even if you talk about India's renewed engagement in Central Asia is the right direction, क्योंकि जितनी भी engagement हुई है Central Asia में, that has played a constructive role in building a healthy relationship. But अभी जितनी vacuums हैं उसको fill करने के लिए और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. Now, great power dynamics की अगर बात करें, one of the major factors जो है in terms of engaging and shaping the power dynamic in Central Asia, यहाँ पे यूएस का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल था जब यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान में थी, राइट. व्हेन इट वाज इन अफगानिस्तान, जब उनके खास करके जब विड्रॉवल हुई है, उसके बाद से दो कंट्री की जो डोमिनेंस है वो बढ़ी है, दैट इंक्लूड चाइना एंड रशिया, राइट. ऑल्दो रशिया के साथ हमारी एक गुडविल है, रशिया इज ऑलरेडी अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद इंडिया, तो यहाँ चाइना की जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है वो अभी भी बढ़ रही है, और रशिया एज अ डोमिनेंट पॉलिटिकल मिलिट्री पावर इन दिस रीजन after the withdrawal and the vacuum that was created by the US, right? Now, focus on Afghanistan has been very significant. जब तालिबान की जब से वहाँ पे dominance हुई है, जो overtake किया है तालिबान ने वहाँ की गवर्नमेंट को, so it has created more focus for India, because India's engagement in Central Asia would help to consolidate the post-American Afghan policy. और US की जो withdrawal है from Afghanistan has landed India in a major dilemma, right? जैसे कि अगर बात की जाए तालिबान 2.0, डिस्पाइट करंट रिलेशनशिप, इंडिया हैज नॉट ऑफिशियली कम अप विद एनी बायलैटरल रिलेशनशिप विद तालिबान. फॉर इंस्टेंसेस अगर बात करें बॉर्डरिंग अफगानिस्तान की, तो अभी भी यहाँ पे जिस तरह की ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है पाकिस्तान या फिर ताजिकिस्तान वाले एरिया पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, और इंडिया के लिए ताजिकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री बन के बनती है जब हमारी अफगानिस्तान के साथ उतनी अच्छी बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं, और तालिबान की जो डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अनड्यू एडवांटेज पे ही आएगी. Now, challenges. What are the challenges? India's return to Central Asia is not going to be easy. This is for sure. And for one, China shares the land borders. तो ये region हमेशा ही एक major investment रहेगी China's के लिए. And China would definitely ensure कि वो इस vacuum को monetarily fill कर पाए. And China in the region, the most economic partner that has worsened Russia's and sharpens India's relative irrelevance in the region. बिकॉज चाइनीज़ ये चाहते हैं कि उनको जहाँ मौका मिले वो इतनी इन्वेस्टमेंट कर दें कि इंडिया की ज़रूरत उस तरह के वैक्यूम में कभी क्रिएट ही ना हो, और इंडिया की जो डोमिनेंस है वो कम की जा सके अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू. दिस इज व्हाट द चाइना इंटेंशन हैज़ ऑलवेज बीन देयर, एंड दे हैव डन सो इन श्रीलंका ऑल्सो, राइट. श्रीलंका में भी उन्होंने ऐसे ही किया. Now, the best shoot for reaching the Central Asian region is buying a hybrid model, जहाँ पे छाबहार पोर्ट की जो रीजन है वहाँ पे ईरान के थ्रू इंडिया एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अदा कर सकता है इन द सेंट्रल एशियन रीजन. Now, if you talk about the way forward, अगर बात करें इंडिया की, जिस तरह से ऑनगोइंग नेगोशिएशंस चल रही हैं, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान एक्शंस हैं ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होगी दैट हाउ द रोड मैप फॉर द सेंट्रल एशिया इज गोइंग टू बी डिसाइडेड, एंड इंडिया वुड एबल टू यूज इट एडवांटेजेस एंड ज्वाइन द सेंट्रल एशियन रीजन, एंड इन टर्म्स ऑफ एंगेजिंग रशिया ऑल्सो विट कैन बी प्लेइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल्स इन द पर्टिकुलर रीजन, जहाँ पे चाइना और रशिया इज अ इंपॉर्टेंट प्लेयर, और रशिया के साथ हमारी अभी भी पॉजिटिव एस्पेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप हमेशा से रही. बट फाइनली इंडिया वर्क दिस टॉक ऑन द कमिटमेंट टू द सेंट्रल एशिया. सो वी हैव टू सी how the diplomatic relations, the bilateral relationship between the Central Asian countries is going to establish, so that we do not create any vacuum which can take an advantage for China, right? So इस तरह से आपको geopolitical news को handle करनी होती है. Those of you who are PSIR student, political science और international relations जिनके subjects हैं, उनके लिए ये topic काफ़ी ज़्यादा important है. So make sure you have ample point to write in mains paper. Now moving ahead with the MCQ questions of the day. जस्ट टू प्रोसीड, आंसर्स बताता हूँ मैं आपको पहले. कल के जो सैटरडे के क्वेश्चंस थे उनके क्या क्या करेक्ट आंसर्स हैं. फॉर फर्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज सी. फॉर सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो द करेक्ट आंसर इज सी. टुडेज एमसीक्यू फॉर प्रैक्टिस आपको बताना है मेकिंग पीस विद नेचर वॉज रिसेंटली पब्लिश्ड. किसने उसे पब्लिश किया है? यूएनईपी, आईपीसीसी, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर. समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. दूसरी क्वेश्चन है वर्टिकल लॉन्च सॉर्ड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल. दिस इज इंडिजियसली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ. इट इज कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एरियल थ्रेट एट क्लोजिंग टारगेट इंक्लूडिंग schemic targets. So do check it out. Which among the following is the correct answers? If you don't know, you have to practice this question so that you can build up a strong foundation for the upcoming prelims examination. This was all about the daily news and editorial analysis
followed by the MCQ questions. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.